Hello students, in the last session we have completed the which all substances are reabsorbed from the loop of Henle's. Okay. Now in this particular session we will be learning about the tubular reabsorption and tubular secretion which takes place in the next part of the nephron, that is DCT. Okay, got it. So we are learning here mechanism of urine formation. So mechanism of urine formation का process बहुत बड़ा है. First is ultrafiltration followed by tubular reabsorption and tubular secretion. वो कहाँ तक आ गए हम लोग फिर tubular reabsorption in loop of Henle's. Now we will be discussing about the tubular reabsorption and tubular secretion in DCT, that is distal convoluted tubule. Okay. So tubular reabsorption, firstly you all know very well, reabsorption में direction कहाँ से कहाँ रहता है, tubule में से peritubular capillaries में, and that too not directly in the peritubular capillaries. Substances which are useful for our body will be firstly entering from the DCT in the interstitium of the cortex, and from the interstitium of the cortex it will enter in blood of peritubular capillaries. Okay. So now let us talk about which all substances will be reabsorbed from DCT in the peritubular capillaries. As you all know very well, tubular reabsorption में क्या reabsorb होता है, important substances. Okay, that is high threshold substances तो already absorb हो गए PCT में, glucose, hormones, then ascorbic acid, amino acids, but there are certain amino acids which will still remain in the DCT, which are high threshold substances. These amino acids will be reabsorbed. Okay, got it. So these amino acids, then sodium ions, chloride ions, then bicarbonates. Bicarbonates are also important for our body. As I have told you, bicarbonate, sodium bicarbonate, potassium bicarbonate plays very important role in carrying carbon dioxide in the form of bicarbonates. Okay. So carbon dioxide in our blood is majorly present in bicarbonates form. Okay. So that's why bicarbonate should be absorbed. कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये बनाने के लिए ये बाइकार्बोनेट आयंस लगते हैं. सो दैट्स व्हाई बाइकार्बोनेट आयंस विच आर प्रेजेंट इन द DCT विल आल्सो बी रीअब्सॉर्ब्ड. सो whatever remaining useful substances which are not absorbed in PCT will be reabsorbed in DCT. ओके. सो जिसका रीअब्जॉर्प्शन PCT में नहीं हुआ है वो फाइनली रीअब्जॉर्ब कौन करेगा, DCT में जो सेल्स है, दोज सेल्स विल रीअब्जॉर्ब. DCT cells, few cells are cuboidal cells having brush border, microvilli, and some of the cells of DCT are squamous epithelial cells. Okay, wherein PCT में altogether all the cells of PCT are cuboidal. So that's why maximum tubular reabsorption takes place in PCT, wherein DCT में कुछ cells cuboidal epithelium से lined रहते हैं. Some of the rest all cells are lined by squamous epithelial cells. Okay, got it. So what are the substances remaining solutes, that is bicarbonate, sodium ions, chloride ions, amino acids. These will be reabsorbed. Okay, these solutes. So 90 to 95% complete solute जितना remaining है DCT में वो पूरा का पूरा blood में चला जाएगा. Then water is always needed for our body. Okay, so जितना water लगता है उतना कम पड़ता है अपने body को. So water is always reabsorbed from the tubules in maximum concentration. Okay. So whatever water which is present in the DCT, that will also be reabsorbed. Okay. Not altogether whole water will be reabsorbed. There is certain limit for reabsorption of water also. Okay. If we are drinking very less amount of water, then our body will need
more water. So more reabsorption of water will take place from DCT. Okay, so 80% of the water is also reabsorbed from the nephric filtrate which is present in the DCT. So DCT का नेफ्रिक फिल्ट्रेट में 80% जो वाटर है वो भी कहाँ चला जाएगा, ब्लड में. देन कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सभी जगह पे कैल्शियम की ज़रूरत रहती है. ब्लड में कुछ लेवल कॉन्सेंट्रेशन रहता है कैल्शियम का. देन कैल्शियम इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. कैल्शियम इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. ओके, गॉट इट. सो कैल्शियम जो अगर ब्लड में का कैल्शियम कम हो गया तो देर इज़ वन ग्लैंड विच विल गेट स्टिम्युलेटेड, दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड. Parathyroid gland produces parathyroid hormone. This parathyroid hormone will enter in the blood and it will stimulate the DCT cells to reabsorb more calcium ions from the nephric filtrate. Okay, so calcium ion reabsorption is stimulated by which hormone? Parathormone or parathyroid hormone. When it will get stimulated? When there is less amount of calcium present in the blood. Okay, कुछ amount of calcium रहता है blood में, and if that concentration decreases then calcium level blood में increase करने के लिए जो calcium nephric filtrate में रहता है वो ज़्यादा reabsorb किया जाएगा, and it is all because of parathyroid hormone. Okay, got it. So whatever reabsorption which is taking place in the DCT, especially which ions? Sodium ions, then water का reabsorption and calcium का reabsorption. ये तीनों का जो reabsorption होता है from DCT in the peritubular capillaries, it is because of influence of hormones. Okay, so that's why the reabsorption which is taking place in DCT is facultative reabsorption or else conditional reabsorption. Okay, condition के हिसाब से अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल, सोडियम लेवल, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे अपने बॉडी में, and these hormones will be released in the blood and these hormones will stimulate the DCT to reabsorb more of those ions. Okay, for example, if in our blood sodium का ions कम हो गया, okay, so this sodium reabsorption should increase from DCT in the peritubular capillaries. When this sodium ions will be maximum absorbed from DCT in the peritubular capillaries? When there is production of aldosterone. Okay, aldosterone is the hormone which is produced by the adrenal cortex of adrenal gland. I hope everyone knows what is adrenal gland. Adrenal gland is the endocrine gland which is located over the kidneys. Okay, एंड एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है उसको क्या बोलते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स विल प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन and this aldosterone will enter in the blood and through blood it will come towards the DCT and DCT will then get stimulated and it will stimulate the DCT cells to reabsorb more of the sodium ions from the tubule in the peritubular capillaries. Okay, so क्या हो गया? कंडीशन के हिसाब से ब्लड में क्या कंडीशन हुआ था? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया था. विच आयंस? Na पॉजिटिव आयंस. सो Na पॉजिटिव आयंस कम थे इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ाया उसका. एंड हाउ द रीअब्जॉर्प्शन हैज़ इंक्रीज? बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन. सो कंडीशन के हिसाब से DCT के सेल्स ने काम किया रीअब्जॉर्प्शन का. कौन से आयंस का रीअब्जॉर्प्शन? सोडियम आयंस का.
That's why such type of reabsorption will be known as conditional reabsorption or facultative reabsorption. Okay, similar way water का जो reabsorption होता है, as I told you, if there is a less amount of water in the blood, okay, so blood volume कम हो गया, body fluids में water का concentration कम हो गया, so body will need more of water, so more reabsorption of water should take place from DCT in the peritubular capillaries. And how it will be stimulated? DCT को कहाँ से तो order मिलना चाहिए, DCT will receive order of a maximum reabsorption of water from which hormone? Antidiuretic hormone. I hope everyone knows this. Antidiuretic hormone ADH is produced by pituitary gland. Okay, so posterior lobe of the pituitary produces ADH. Okay, so ADH which is there stored in the posterior lobe of the pituitary, this ADH hormone will be entering in the blood and it will go towards the DCT cells. DCT cells will get stimulated, and once the DCT cells get stimulated, there will be maximum absorption of water, okay, from the DCT in the peritubular capillaries. Okay, so anti-diuretic hormone ऐसे क्यों बोला उसको? Diuresis के against है. Diuresis means what exactly? हाइपोटोनिक अगर यूरिन हो गया, यूरिन में ज़्यादा वाटर है, मीन्स वाटर इज गेटिंग एक्सक्रीटेड इन मोर क्वांटिटी, दैट इज नोन एज डायूरेसिस. एंड एंटी डायूरेसिस में क्या हो रहा है? वाटर विच इज प्रेजेंट इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज एंटरिंग इन द ब्लड, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज डिक्रीजिंग. सो यूरिन जो बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा बिकॉज ऑफ secretion of ADH. So यहाँ पे भी क्या हो गया? As per the condition, अगर body fluid का जो वॉल्यूम है कम हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स में कम हो गया, इसकी वजह से ADH प्रोड्यूस किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने, and ADH then enters in the blood, and that ADH which is there, it is stimulating the DCT cells to reabsorb water. सो कंडीशन के हिसाब से एब्जॉर्प्शन हो रहा है DCT में, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन. सो देर इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इन DCT ऑफ सोडियम आयंस ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन and of water due to secretion of antidiuretic hormone. Similar way, there is conditional reabsorption of calcium ions from DCT in the peritubular capillaries due to production of parathyroid hormone. Okay, so hormones की वजह से reabsorption होता है सोडियम का, वाटर का एंड कैल्शियम आयंस का, okay, in the DCT. That's why it is conditional or facultative reabsorption. Very very important question which can be asked in exam. Okay, now we'll study what is tubular secretion. Tubular secretion मैंने क्या बोला था? Secretion means here not exactly any substance is getting secreted, there is addition of the substances from the peritubular capillaries in the DCT. So which substances will get added in the DCT? Those substances which are not needed by our body. So जो blood में harmful substances है, excess substances है, these all substances will be entering from the peritubular capillaries in the DCT. Okay, so look at the direction here. दिस इज टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? DCT का टिब्यूल से पेरिटिबुलर कैपिलरीज में, और यहाँ पे टिब्यूलर सिक्रीशन का डायरेक्शन कहाँ है? पेरिटिबुलर कैपिलरीज से DCT में. ओके, सो देर इज एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द पेरिटिबुलर कैपिलरीज इन द DCT. सो विच आर दोज सब्सटेंसेस? अमोनियम आयंस, then potassium ions which are present in the peritubular capillaries are carried here.
then H positive ions to maintain the pH of the blood, then drugs, pigments, creatinine. Okay, so all these are waste. These will be released out from the peritubular capillaries in DCT. Okay, and thus the nephric filtrate will then pass in the collecting duct. So all of you understood which is the substance which is getting added in the DCT? Ammonium ions, K positive ions, H positive ions, drugs, pigments and creatinine. Okay, so लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस है ये सब जो कि बॉडी को नीडेड नहीं है. ओके, विच वन? स्पेशली अमोनियम आयंस. अमोनियम आयंस, देन एक्सेस पोटेशियम आयंस हो गए तो वो भी लो थ्रेशोल्ड हो जाते हैं फिर. ओके, एक्चुअली स्पीकिंग नॉट ऑल द पोटेशियम आयंस आर यूजलेस. सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस बोथ आर नीडेड फॉर प्रॉपर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. नॉर इम्पल्स जो कंडक्ट होता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प्स ऑल्सो. ओके, सो एस्पेशली जो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कौन से? अमोनियम आयंस, ड्रग्स, पिगमेंट्स, क्रिएटिनिन, दीज आर लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. दीज विल बी थ्रोन आउट from the blood in the DCT. So all of you understood how tubular reabsorption and tubular secretion takes place in DCT. Okay, so please revise this topic several times. Mechanism of urine formation. Several lectures are there on this particular topic. So I have separately drawn the tubules to make you understand in proper way. Okay, got it? So in the next session we will be learning about the reabsorption which will take place in collecting duct. Thank you.